Maggavagga वर्सेस अबाउट द पाथ। तो ये जो मार्ग है उसके बारे में पद है। हम पद संख्या 277 से 279 पढ़ने जा रहे हैं और इनके नाम है अनिच्च लक्षण वस्तु, दुख लक्षण वस्तु, अनत्त लक्षण वस्तु वर्सेस रिलेटेड टू अनिच्च, दुख एंड अनत्ता। हमारी चैंटिंग बुक में भी हम इनको पढ़ते हैं। तो इसके बारे में जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू कमेंट्रीज द बुद्धा गेव दिस टीचिंग टू 500 भिक्षुस हु हैड कॉन्टेम्पलेटेड द त्रिलक्षणा इन प्रियोर लाइव्स। तो भगवान बुद्ध ने ये 500 भिक्षुओं के ग्रुप को अलग अलग तरह से दिए थे, क्योंकि उन भिक्षुओं ने अपने पूर्व जन्मों में किसी एक ग्रुप ने अनिच्च लक्षण पर ध्यान लगाया था, किसी दूसरे ग्रुप ने दुख लक्षण पर ध्यान लगाया था और किसी तीसरे ग्रुप ने अनत्त लक्षण पर ध्यान लगाया था। तो उनके लिए कमठान दिया था। पद संख्या 277 है। सभ्ये संखारा अनिच्चाति यदा पर्याय पश्यति अथ निप्पिन्दति दुःखे एषमग्गो विशुद्धिया। When one perceives with wisdom that all conditioned things are anicca, then one wearies of suffering. This is the path to purify. तो जब कोई व्यक्ति प्रज्ञा से समझ जाता है कि सारे संस्कार अनित्य है, तो वो दुख से निवृत्त हो जाता है और ये विशुद्धि का मार्ग है। सभ्ये संखारा दुःखा यदा पर्याय पश्यति अथ निब्बिन्दति दुःखे समग्गो विशुद्धिया। When one perceives with wisdom that all conditioned things are dukkha, then one wearies of suffering. This is the path to purify. तो जब कोई व्यक्ति प्रज्ञा से समझ जाता है कि सारी संस्कार दुख है, तो वो जो सफरिंग्स है उनसे निवृत्ति की ओर जाने लगता है। यही मार्ग विशुद्धि का मार्ग है। सभ्ये धम्मा अनत्थाति यदा पर्याय पश्यति अथ निब्बिन्दति दुःखे एषमग्गो विशुद्धया। तो जब कोई प्रज्ञा से जान जाता है कि सारी वस्तुएं अनात्म है, तो वो दुखों से निवृत्ति की ओर जाता है और यही विशुद्धि का मार्ग है। तो इनके ऊपर जो विशाल जी ने फिर अपनी कमेंट्री दी है, मैं उनको पढ़ता हूँ, साथ में वो उसको एक्सप्लेन कर देंगे। और ये उन्होंने दिया है अंगुत्तर निकाय 4.49 से विप्पला से सुत्ता। विशाल जी, would you like to first speak or should I translate it first? Yeah, sure. So I thought that, these three verses are basically the core of the Buddha's teachings, and they're also an explanation of reality in the Buddha's dispensation. So these really are very, very important teachings. And I thought that there's so many suttas that have elucidated this, the Dhammacakkappavattana Sutta, the Natalakkana Sutta, that, they talk about the sequence and why this is the case. But I thought that, for most of us, when we conceptually think about it, the anicca, the impermanent nature of things and the suffering nature of things is quite intuitive and intellectually valid. But the place where oftentimes the mind has a problem is the anatta, the not self, non-self, or selfless nature of phenomena. And essentially, the anatta is the heart of the Buddha's teachings, and the formula that the Buddha uses is to start with anicca and then work the way to anatta. So I thought that, this is a very big topic, but I thought we could focus a bit on anatta as it's explained in many suttas, but I just curated a couple. And then we can talk about, the path that gets us from the vipalasas or the perversions of perception to
what the Buddha is describing. So I thought we could start with this sutta. So Nikhilji, you could translate. Okay. So Vipala Sutta mendicant, there are these four perversions of perception, mind and views. What for? Taking impermanence as permanence, taking suffering as happiness, taking not self as self, taking ugliness as beauty. भिक्षुओं, संज्ञा, चित्त और दिट्ठी के ये चार विकार हो सकते हैं. कौन से विकार? अनित्य को नित्य मान लेना, दुख को सुख मान लेना और अनात्म को आत्म मान लेना और जो असुंदर है उसको सुंदर मान लेना. These are There are these four corrections of perception, mind and views. What for? Taking impermanence as impermanence, taking suffering as suffering, taking not self as not self, taking ugliness as ugliness. And ये चार प्रकार के सुधार है जो संज्ञा में, चित्त में और दिट्ठी में कर सकते हैं. कौन से चार? कि हम अनित्य को अनित्य जाने, दुख को दुख ही जाने, अनात्म को अनात्म ही जाने और जो असुंदर है उसको असुंदर ही जाने. एंड इसमें विशाल जी ने थोड़ा जो एक्स्ट्रा हमें बोला, उन्होंने बोला कि अनित्य दुख हमें सामान्यतः दिख जाता है, लेकिन अनात्म समझने में हमें थोड़ा तकलीफ होता है. तो उसको भी उन्होंने आगे की सूत्रों में और इनके इसके माध्यम से समझाने की कोशिश किया है. किसी को कोई प्रश्न हो तो बीच में रोक के पूछ सकते हैं या बाद में पूछ सकते हैं. सो दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड. विशाल जी, ओवर टू यू. Sure. So basically, the way that we view the world is that we often cannot discern the sankharas as impermanent. And so because of the fact that phenomena are changing so quickly and moving so rapidly, there is this illusion of continuity and permanence. And so sankharas seem nitya, and there is a sense that because we cling to it and there is pleasurable feeling associated from many of these, so we think of them as also sukha, happiness. And then also because there is a perversion of self-making, so we imagine things to be atta or self. And so how do we go from that to what the Buddha teaches, which is that all sankhara are impermanent, all sankhara are suffering, and then all dhamma are anatta. So the reason in the third formulation it's sabbe dhamma and not sabbe sankhara, because in this formula sabbe dhamma also includes nibbana, and nibbana is also anatta. So that's the reason that the Buddha says it in the way he does. And the way that we go from the left side, which is the view of a Patujana, to the right side, which is right view, is through the Eightfold Noble Path. And in this particular presentation, I thought we could talk about it in a way that's described in the suttas in the form of dana, sila, bhavana, which is sort of an abbreviated, graduated training, but it's often taught in the Thai forest tradition too, and especially to lay people. So I thought we could look at it in that way, because it will probably be more relevant or to a lot of us who are obviously in lay life. So I'll stop there, Nikhilji. तो ये जो स्लाइड है इसमें एक तरफ पुथुजन का माइंडसेट दिखाया गया है और दूसरी तरफ एक आर्य श्रावक जो अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कर रहा है उसका माइंडसेट है राइट साइड. तो जो आम जन है, बुद्धजन है, उनके लिए लिखा गया है कि वो इन सबको संस्कारों को नित्य मानते हैं, सुख मानते हैं, उसमें सारे धर्मों में आत्म भाव देखते हैं. साथ ही विशाल जी ने मेंशन नीचे किया हुआ है कि संखारा रिफर्स ओनली टू संकता धम्मा, कंडीशन थिंग, वेयर सभ्य धम्मा इंक्लूड निब्बाना. तो जो जितने भी कंडीशन फिनोमिना है जो एक दूसरे पर आधारित है उनको संखारा बोलते हैं, जबकि यहाँ पर जो सभ्य धम्मा वर्ड यूज किया गया है सभ्य संखारा की बजाय, तो वो इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें अब निब्बान भी आ जाता है. निब्बान भी अनात्म है और अदरवाइज निब्बान अनित्य और दुख तो नहीं है, अनात्म है. एंड और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इतना तेजी से घटनाएं बदलती है कि और उसमें हम चूंकि
अपना चिपकाव थोड़ा सा कभी कभी लाते हैं तो हमें सुखद भावना होती है, और फिर हम उस प्रोसेस में वो उनके असली नेचर को भूल जाते हैं, उनकी कंटिन्यूटी में बह जाते हैं। मैं नेक्स्ट साइड पे जाता हूँ। ये दानशील भावना इस आरिष्टांगिक मार्ग की तरफ ही ले जाने वाला पाठ है। आरिष्टांगिक मार्ग ही है ले जाने वाला, आरिष्टांगिक मार्ग ही है ये। Okay, so as I had mentioned earlier, I thought now we could talk a little bit about the attabhava or self-making. And this has been described in many suttas, but I thought I would pick this one. And we can just look at it in terms of just the form element, the body, and see how for each of these five aggregates that the self can be created in four ways. So the mind can regard form as self, or self as having form, as in this is myself, is this body is myself, or myself has a body, or my body is in the self, or the self is in the body. And in the same way, all of the other four aggregates as well, it's the same way. This is also vipalasa in a way, this misperception, misunderstanding of how the self is created. So I'll stop there, Nikhilji. हम संयुक्त निकाय 22.47 समानुपස්සना सूत्र से रेफरेंस ले रहे हैं, जिसमें 20 प्रकार से किस प्रकार से आत्मभाव जागता है उसका जिक्र किया गया है। तो 4 प्रकार से हर खंड के ऊपर बात की गई है। हमारे 5 खंड होते हैं, तो उसमें जैसे रूप खंड के बारे में है कि केवल हम रूप खंड को आत्म मान लेते हैं, अपने शरीर को, रूप को, या फिर हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो आत्म है उसने ये रूप को रखा हुआ है, या हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी आत्म है उसके अंदर ये रूप है, और या फिर हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा आत्म है वो इस रूप के अंदर है। तो ये 4 प्रकार से हम समझने की कई बार मन में मान लेते हैं, और इसी प्रकार हम बाकी खंडों के लिए भी लगा सकते हैं। वेदना के लिए भी हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये वेदना ही हम है, या फिर वेदना ने ये शरीर रखा हुआ है, या शरीर में वेदना है, या वेदना में शरीर है। इसी प्रकार फिर हम संज्ञा के बारे में सोच सकते हैं, संखार के बारे में सोच सकते हैं, और विज्ञान के बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं। तो इस प्रकार 20 प्रकार से हम आत्म बनाने की तरफ जा सकते हैं। So just to clarify, for all of the other four, it would be feeling as self, self as feeling, feeling in self, and self in feeling. So we wouldn't talk about, I think, Nikhilji, if I understood correctly, you were talking about feeling in the body, but that's not what is being talked about here. So essentially, the other four khandhas would also be regarded as self. And so we talk about the body as one way, and then feeling, perception, consciousness, formation. So the mind construes these in those four ways as self, independent of the form. That's the way in this formulation the Buddha has described it. Yes. विशाल जी is just I mean making the point कि फीलिंग शरीर में नहीं, फीलिंग को आत्म मान लेना, ये मिथ्यादित्य है। The शरीर is form already in the first खंड that is covered, then feeling is a separate thing, and इसको आत्म भाव से रिलेट करना है, ना कि शरीर से। Make sense? Yeah, true. Okay, thank you. Yeah. Okay, so I thought that this is a very important sutta in the canon. There's a few like this, but this one is, I just took a little bit of the sutta. It's much longer, but I think this sutta describes in some clarity this possible idea of there being something beyond. So the Buddha says, apart from form, feeling, perception, and formations, I will suppose a mendicant was to say that I will describe the coming and going of vijnana, its passing away and reappearing, its growth, increase, and maturity. That is not possible.
So essentially, he's saying that consciousness is dependent on the other four khandas, and I think in other suttas they're described as two sort of reeds, collection or collection of reeds or pieces of wood that are stacked up against each other, and both need the other. And specifically here, the consciousness, the vijnana khanda, is being treated separately, and because it's dependent on these others. And so then the Buddha goes on to say that if a bhikkhu has given up greed for the form element, that support is cut off, and there is no foundation for arising of consciousness with the form element. Likewise, for all the other three other khandas, there is no foundation for the consciousness to arise if the greed for those khandas is also let go. And then he says that since that consciousness does not become established, does not grow, with no power to regenerate, it's freed. Being free, it's stable. Being stable, it's content. Being content, they are not anxious. Not being anxious, they personally become extinguished. There he's referring to the bhikkhus. They understand rebirth is ended. There is no return to any state of bhava, any state of existence. So I will let Nikhilji translate that. ये बीज सूत्र को पिकअप किया है। इसमें भिक्षुओं को भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि विज्ञान किस प्रकार बाकी चार खंडों पर आधारित होता है, जैसे कि शरीर, रूप हो गया, वेदना, परसेप्शन, संज्ञा और संखार है। और I will describe the coming, going, it's passing away, its growth, that is not possible. तो विज्ञान, अगर ये चारों चीजों अगर नहीं है तो फिर ये हमारा विज्ञान जागेगा ही नहीं। और इसके लिए विशाल जी ने बोला, जैसे एक लकड़ी के ऊपर दूसरी लकड़ी रखी हुई है, इसी प्रकार ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जो विज्ञान है वो बाकी चार खंडों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और अगर जो हमारे मन में लोभ है या जो राग है, जो धातु रूप है उसके प्रति, रूप धातु के प्रति है, अगर उस राग को हम काट दें तो जो विज्ञान को रूप के ऊपर आधारित होने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम वेदना, संज्ञा, संखार के प्रति भी अपने राग को खत्म कर दें तो जो कॉन्शियसनेस है, विज्ञान धातु है, वो भी खत्म हो जाएगी, उसको कोई आधार ही नहीं मिलेगा। एंड क्योंकि कोई और अलग से अत्था है ही नहीं, तो फिर वो विज्ञान भी खत्म हो जाएगा। एंड सिंस दैट कॉन्शियसनेस डज नॉट बिकम एस्टैब्लिश, और अगर विज्ञान स्थापित नहीं हो पाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो फिर हम एक तरह से कह सकते हैं कि जब हमारे अंदर विज्ञान को कोई आधार नहीं मिलता है तो हम कह सकते हैं कि हम मुक्त हो गए हैं, हम लिबरेशन की तरफ जा रहे हैं। एंड बीइंग फ्री इट इज स्टेबल। और चूंकि जो लगातार बदलने वाले चार खंड हैं उनके ऊपर वो आधारित नहीं है और हम उससे मुक्त हो चुके हैं, तो हम स्टेबल, स्थिर हो जाते हैं। जब हम स्थिर हो जाते हैं तो हम एक तरह से संतुष्ट हो जाते हैं, और संतुष्ट होने पर फिर हम एंग्जियस नहीं रहते, हमारे अंदर कोई उधर से कुछ नहीं जागता, कोई भी एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस नहीं जागती। और जब हम इस प्रकार रेस्टलेसनेस नहीं रहते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर एक तरह से एक्सटिंग्विश्ड, मतलब जो फ्यूल है, राग, द्वेष और मोह की अग्नि जल रही है, वो खत्म हो जाती है। एंड दे अंडरस्टैंड दैट rebirth इज एंडेड, देयर इज नो रिटर्न टू एनी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस। एंड देन हम समझ जाते हैं कि पुनर्जन्म समाप्त हो गए, अब पुनः किसी अवस्था में आना नहीं होगा। तो इसमें भी अगर अभी आगे भी स्लाइड है, अगर किसी को इसमें भी प्रश्न पूछना है, although I will ask probably that I mean, you mean to say that consciousness is foremost, and I mean, if consciousness is foremost, right? Otherwise, we think that this is one of the element out of 18 element. So consciousness is one of the five khandas, yes. But you're right, in the suttas, the mind has always been at the forefront of all things. But consciousness is dependent on the other four khandas. And what connects the consciousness to the other four khandas is the clinging, upadana.
and well, it's generally upadana is mixed with the five khandas. So when upadana ends and there's no clinging, then essentially there is no more becoming. Once the person finishes their current bhava, their current life, and if there is no upadana at all, then they are extinguished. They personally become extinguished, it says in the last paragraph. And they understand rebirth has ended, there is no return. The important thing is rebirth is ended, but not my rebirth is ended, just rebirth is ended. And that would be the understanding of anatta. I just have a confusion, so I wanted to get clarified. When we are talking about consciousness, तो हम अभी तक जान रहे थे कि एक तो खंड ही है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हम पढ़ते हैं कि इंद्रियों की कॉन्शियसनेस, और एक है जो प्योर चित्त है हमारा. तो हम जब बात कर रहे हैं कि उपादान नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो इंद्रियों की जो कॉन्शियस इंद्रिय विज्ञान जो है, ये तो दिस विल इट फिनिश. आई मीन इंद्रिय विज्ञान तो हमेशा रहेगा ना. जो नहीं रहेगा वो तो चित्त का प्योरिटी हो जाएगा जब मेरा उपादान खत्म हो जाएगा. उपादान इज बिकॉज ऑफ द ग्रीड विच राइजेस इन द माइंड. वो शब्द है, शब्द कान में आ रहा है और मैंने कोई रिएक्शन नहीं किया तो इट्स ओके. लेकिन डज दिस रेफर टू इंद्रिय विज्ञान और इट रेफर्स टू द कॉन्शियसनेस, जो कि एक अलग चीज है? प्लीज लेट मी understand that. Yes, so there's two things in what you said, Rajendraji. The first is upadana, and upadana in the Chula Vidala Sutta is called not the same as the khandas, but not separate. So it's sort of mixed up, and so that's the first question. The second one is a difficult question because of the idea that, you know, in other forms of Indic philosophy of this everlasting and abiding chitta. In the Buddha's teaching, that is not the way that it is described. Chitta is just another word for vijnana. And there's another sutta called the Sabha Sutta, the All, in which the Buddha basically describes that all of these khandas and you know, the sense bases, that's all of existence in the human realm or in any realm. So this idea of what happened, what you're asking really is when an individual, when a being is fully enlightened, what happens to their liberated mind or chitta? And that's a question that the Buddha has never really completely answered directly, but he has answered it indirectly in the tetralemma, right? Does the Tathagata exist after death? Does after parinibbana? Does he not exist after parinibbana? Does he both exist and not exist? And does he neither exist nor non-exist? So, and all of those four, he was silent. So I would say that given that, you know, we are beings with ignorance, for us to, it's the question of the arrow, right? We are stung with the arrow of pain, but we have to work on getting the arrow out. For us to try to understand what is the state of abiding of an arahant is impossible because of the ignorance in our mind. So no matter what an arahant might say, which might even actually not be possible to convey, we are bound to misunderstand. So I would say that we shouldn't worry about what happens to the chitta after liberation, because that is a very distant future for our minds. We should just worry what is the current state of being, what is the current suffering, and see, like we had talked once before, you know, having faith, shraddha, that I may not understand these things now, but I will work with the mind I have and the kilesas that currently fill the mind, and I will understand how to let them go. And then
just keep practicing and not worry about what is the state of a fully enlightened being. Does that make any sense? Confused. Anyway. Surely, I think this is very rightly put, as you have put. Bhagwan Buddha has, of course, described consciousness in this manner. But then, you have sentences like, it is stable. So here, I guess it is referring to consciousness. It is content. So I think that's the kind of language that sometimes causes confusion. What is stable? Is it the... Yeah, so that very well could refer to the consciousness of a living, fully enlightened being, because after all, they're still alive and they have to finish the bhava, this current life. And so it's just referring to a fully equanimous mind. And they personally, because one of the knowledges of an arahant is knowing that they are an arahant, that there is no more defilement in the mind and the rebirth is ended. So I think that's the being stability, and the contentment is likely just referring to the state of mind of a being that has seen the Dhamma and attained to the Dhamma, Okay. Thank you. Sure. Dana. So I thought then we could just examine the Eightfold Noble Path, which here is presented in a threefold manner: the Dana, Sila, Bhavana. And I thought that we could talk a little bit about Dana, because Dana is the very sort of foundation of the journey, and is something that lay people can build on, the Dana Parami. And Dana is really a way of attenuating self-cherishing or greed. And so the material Dana, there's a beautiful sutta in which the Buddha says, if people only knew as I do the results of giving and sharing, they wouldn't eat without having given. So, material Dana of any kind that we're able to make to other beings that are less fortunate, or to a bhikkhu sangha that is well practiced, would be of great merit. And then also, we can't always have wealth that we can give away, but the dana of kindness and attention, to people that are surrounding us in different ways, people who wait on us, people who serve us, or colleagues, or our children, or spouses, or other people that are within our friend circle. And then also the dana of forgiveness, dana of essentially letting go of any sort of conflict or grievances. And then the dana of honesty, which is that, you don't take something that you don't earn or is not yours. And then also at our work and other ways. And then the dana of non-harming, which essentially covers almost everything, which is again a dana of compassion and the attenuation of self-cherishing. And then the renunciation, which is both material and also emotional and mental, where we cherish our own emotional and other needs over other people's. So the dana bucket can actually be very, very large, and can be very relevant to our day-to-day life in ways more than just giving of material wealth or money, but it can essentially involve all aspects of our interactions with other beings, even non-human beings. So I thought that, for us, it's important. And there are a couple examples that I can share. One of them is obviously it's described in Ajahn Chah's book, where
his mother would always give the best fruit from her fruit trees away as dana to the monks, which I thought was a beautiful practice in Thailand. The other is a very acclaimed master in Thailand, who I know is, grew up in a very poor farming family, but he describes his having learned very, very strong ethical principles from his mother, who was uneducated and poor, and also kindness and compassion. And he says that he never saw his parents ever argue or fight or be firm or angry with the children. So again, goes to show that this sort of parami of dana and even sila can be practiced at all levels of material comfort, education, affluence, and essentially in Thailand we see a lot of Kuba Ajahns who come from very poor families, but are one of the wisest people on the planet. Most of them, the ones I met, are probably would list in the wisest people on this planet. So I thought I would just talk about that briefly. So I'll stop to translate. निखिल जी। तो इसमें दान के बारे में बता रहे हैं। दान देने से जो हमारा लोभ की प्रवृत्ति है, लोभ, वो कम होता है। और दान के अलग अलग प्रकार हैं। एक तो मटेरियल दान है, भौतिक वस्तुओं का दान है, जिसके लिए इति बुद्धक में भगवान बुद्ध ने कहा है कि अगर लोग जानते कि इस प्रकार देने का और शेयर करने का कितना अच्छा कम फल मिलता है, तो फिर वो कभी भी विदाउट किसी को दिए बिना खाएंगे ही नहीं। लेकिन ये तो मटेरियल दान के बारे में है। साथ में दान में हम किसी को करुणा का और उसको सुनने का अच्छे से दान दे सकते हैं, क्षमा करने का भी दान दे सकते हैं। हम ईमानदारी से रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, किसी की कोई वस्तु नहीं दी हुई है तो नहीं लेते हैं, तो वो ऑनेस्टी का दान होता है। अहिंसा का भी दान कर सकते हैं। और साथ में त्याग, जो रिनंसिएशन है, जिसमें हम केवल अपने इमोशन के बारे में नहीं सोचते, दूसरे के बारे में भी सोचते हैं और स्वार्थी ना होकर निस्वार्थी होते हैं, उस प्रकार का हमारा व्यवहार भी दान के अंतर्गत ही आता है। ये सब लोग को कम करता है। जैसे कि अजान चा के बारे में उन्होंने बताया कि उनकी माता जी उनके बाग में जो सबसे अच्छे फल होते थे वो भिक्षुओं के लिए ही रखती थी और उनको ही दान में देती थी। और इसी प्रकार एक और अजान के बारे में शायद बता रहे हैं कि उनके माता पिता का जो बिहेवियर था बहुत पोलाइट था। कभी तो उनको देखकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा। वो शायद ही कभी बच्चों को उनके माता पिता ने डांटा या झगड़ा किया। तो ऑल्दो वो अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी उनसे भी उन्होंने उनको जो दान दिया अपने बच्चों को, वो काइंडनेस और मैनर्स का दान दिया। सो दिस स्लाइड वाज अबाउट दान। नेक्स्ट इज शीला। Yes, so for sila, it's thought to help attenuate some of the aversion or hatred or anger in the mind. And so we've talked about this in a prior meeting, the different precepts. The 5 precepts certainly are to reduce aversion. And then when we go to the 8 to the 10, then it becomes more and more about mental development and bhavana. And so there's a nice story of Ajahn Mun. I think Ajahn Chah had asked Ajahn Mun about, there's so many precepts and how to keep them all correct. And Ajahn Mun had said, just remember Hiri Ottappa, and then you will never go wrong. So Hiri Ottappa is basically the qualities that keep the world safe, and they're thought to be the quality of devas, of heavenly beings. And then sila then further, as I mentioned earlier, trains the mind to do with less, and so restrains the mind and then prepares it for mental cultivation, which is bhavana. And then I thought it would be important to note that dana and sila, if done correctly, require a certain level of sati and panya, because one has to always be aware of what one is doing and what is the appropriate action in that moment. And this is something that has actually formed the basis of societies in many East Asian and Buddhist countries. In Japan, there is different aspects of their
life, the tea ceremony, the haiku, they have this concept of wabi-sabi, and just their general attention to detail is all derived from Buddhist principles. And in Thailand, I believe that the group had visited there recently for the Uposatha all inauguration, and there's this concept of Rip Roy and Jayadi, which is also, along with many others, that are all part of this Satipanya with Dana and Sila. So it has societal implications, not just to the individual. So I'll stop there for translation. शील का पालन करने से हमारे अंदर जो द्वेष है वो कम होता है, और अगर हम जो 5 प्रीसेप्ट्स हैं या 5 शिखा के पद है या 8 है या जो 10 है उनको फॉलो करते हैं तो वो शील के अंतर्गत आते हैं। इसमें जिक्र किया कि अजान मन ने एक बार बताया था कि अगर कितने याद रखने कितने भूल जाएं, ऐसा कुछ कंफ्यूजन है, तो हीरी एंड ओतप्पा को अगर हम मन में रखें तो वो सफिशिएंट है, बाकी शीलों को अपने आप ही वो विकसित कर देता है। दैट इज मोरल शेम एंड मोरल फियर, और रेस्ट्रेन जो नैतिक भय और जो नैतिक शर्म है, अगर हम उसको जीवित रखेंगे तो बाकी शील अपने आप फॉलो होते जाते हैं। एंड रेस्ट्रेन द माइंड एंड प्रिपेयर इट फॉर भावना, शील का से क्या होता है कि हमारा मन थोड़ा सा प्रशिक्षित हो जाता है आगे के लिए, समाधि की ओर जाने के लिए। अगर शील नहीं होंगे तो मन शांति नहीं होगा, चित्त शांत नहीं होगा तो शुद्ध कैसे होगा। और इसमें फिर ये भी बताया कि अगर हम ये दान और शील करते हैं उसके लिए एक लेवल ऑफ सती एंड पहिया का भी हमें रिक्वायरमेंट होता ही है कि हम क्या दान दे रहे हैं, क्या शील का पालन कर रहे हैं। तो वो भी हमारे लिए एक तरह से टूल का काम करता है सती पहिया को डेवलप होने के लिए। और ये केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं, एक सोसाइटी के लिए भी बहुत जरूरी चीजें हैं। जापान में इसी के बेसिस पर या थाईलैंड में इस तरह की सोसाइटीज बनाई गई हैं जिसमें वो साथ में चाय पीते हैं एंड ऑल। सो सोसाइटी के लिए भी शील और दान ये बहुत आवश्यक चीजें हैं। देन भावना। All right, so then we can talk about the bhavna, which is the third component, which is built on the dana and sila. And we've talked about this before, I think, so we can quickly go over it. But basically, the mind that's readied by the other path factors, the samma sati and samma vayamo, help the mind to enter into samma samadhi. And then I thought it would be important to look at the idea of hindrances or kilesas, because it's something that we are always trying to run away from, but they're actually really important in the way that Kuba Jans talk about it, because they really are a snapshot, and they give us a sort of opening into the current karma of our mind. So if a person has more anger or more hatred or more greed, or we know that then that is the karma of that mind, and so we know that this is something that I have to work with, and we devise strategies to understand these kilesas so that to be able to let them go, we don't just try to suppress them. And so we've talked about this before. This letting go of the hindrances is done by right effort, and also samadhi, the mundane right view, which is the mundane Dhamma Vijaya. So we look at the three characteristics that we just talked about, and we try to understand them in a very mundane way, and that helps us to let go of kilesas. And this actually, this overcoming of the kilesas is a really important step in the path of bhavana, because it gives the mind a confidence, because the mind is able to let go of things that usually torment the mind. However, this level of wisdom and this mode of acquiring this wisdom, which is just the sort of letting go of hindrances repeatedly, is not really sufficient for liberation. We need to develop a higher level of wisdom for that, but it is a very important step. And so again, the kilesas are essentially a biopsy, or if you may, of the mind, and the unique way in the way that particular mind's self-view is created. And then basically samma samadhi is what forms the basis of liberation. But
this initial stage of getting to that Samma Samadhi is a very important skill set that the mind acquires. So I'll stop there. ओके इसमें धर सर एक थोड़ा सा अगर आप मुझे मदद करेंगे कि एक्चुअली हिंड्रेंस इज नीवरन, क्लेशा इज अनुशय क्लेश हमने लेटेंट टेंडेंसी में पढ़े थे, सो व्हाट आई थिंक दिस इज लेटेंट टेंडेंसी, राइट? द रोल ऑफ हिंड्रेंस. I could actually answer that. Kilesa is used colloquially in Thailand to refer to these hindrances. So that's basically what it is. Yeah. So, I mean, you mean to say it is Nivaran here or it is Vikara? Yes. So it's, you know, the five hindrances that arise, it's referring to those. Okay. Okay. Kamachanda and dosha, and these five hindrances. Okay. That's right. Yes. Okay, ठीक है. Thank you. मैं उसको ट्रांसलेट कर देता हूँ. So, जो भावना जो हम करते हैं दान और शील के बाद, जब हम भावना वाले सेक्शन में जाते हैं तो वो हमारे अंदर जो मोह है उसको खत्म करता है, अविद्या को खत्म करता है. और ये जब हमारा मन तैयार हो जाता है बाकी 5 फैक्टर्स को फॉलो करने के बाद और दान और शील का अभ्यास करने के बाद, और उसके उपरांत सम्मा सती और सम्मा व्यायामों की मदद लेते हैं, तो उसके बाद हमारा चित्त तैयार हो जाता है कि हम सम्मा समाधि की ओर जा पाए. और जो हमारे अंदर छुपे हुए निवरण है, जो क्लेशा है, वो बेसिकली हमारे कर्मों का ही एक, आप कह सकते हैं कि एक छाया चित्र है, और हमें उनको समझना होगा और समझ के उनके प्रति आसक्ति को त्याग देना होगा, उनको चले जाने देना होगा. एंड दिस लेटिंग गो इज बाय सम्मा व्यायामो एंड मुंडेन सम्मादिट्ठी दैट द माइंड हैज एक्यूमुलेटेड बाय द मुंडेन धम्मविचया. अब ये जो लेटिंग गो है उन कर्मों का, उन क्लेशों का, वो सम्यक व्यायाम के थ्रू होता है, जिसको हम आर्ष्टांगिक मार्ग में पढ़ते हैं. और उसके लिए हमें एक भौतिक लेवल पर, कम से कम लौकिक लेवल पर तो एक सम्यक दृष्टि का अभ्यास करना होता है, और एक भौतिक लेवल पर ही धम्म विचय भी करना होता है. ऑल्दो उसके जब हम उसमें समाधि में जाते तो हम फिर थोड़ा और ऊपर उठ के भी ट्रांसेंडेंटल सम्मादिट्ठी भी मिलती है, लेकिन अभी एक मुंडेन सम्मादिट्ठी भी चाहिए कि हमें क्यों करना है, और धम्म विचय भी मुंडेन लेवल पर चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर प्राइमरी विजडम. और ये जो शुरुआती हमारी प्रज्ञा है उसके जागने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है. However, this level of wisdom and the mode of acquiring is not sufficient for liberation. तो जैसा मैंने भी कहा कि ये शुरुआती दौर में हमें चाहिए होता है, लेकिन इससे हमारा मुक्ति नहीं हो जाएगी. मुक्ति तो जब हम समाधि में पक जाएंगे उसके बाद ही होगी. And the suffering of kilesha is related to the unique way of mind self-view is created. Whenever the mind suffers, at the core is upadana to a self. So कहीं ना कहीं जो भी निवरण है, जो भी विकार है, क्लेशा है, जो जाग रहे हैं, वो आप देखेंगे तो वो माइंड का आत्म भाव भी होता है. कहीं ना कहीं माइंड किसी खंड को आत्म मान के उसके साथ उपादान कर रहा होगा, और इसीलिए वो क्लेशा आ जाते हैं. एंड समाधि फॉर्म द बेसिस फॉर लिबरेटिंग सम्मा समाधि फॉर्म द बेसिस फॉर लिबरेटिंग समाधि. अब ये जब हम सम्मा समाधि का अभ्यास करते हैं तो वो एक फाउंडेशन देती है, आधार देती है, जो कि हमें मुक्तिदायक सम्मा दृष्टि की ओर, सम्यक दृष्टि की ओर ले जाती है. यानी मुंडेन सम्मादिट्ठी से अब हम लिबरेटिंग सम्मादिट्ठी की ओर जाना है, तो सम्मा समाधि विल फॉर्म द बेसिस. नेक्स्ट स्लाइड. Okay, so then I thought, you know, it's really important for us to understand like Samma Samadhi, like what exactly is Samma Samadhi, because there was Samadhi of a very high level during the Buddha's time outside the Buddhist dispensation. But what makes Samma Samadhi is that it is associated with right view, even a mundane right view. And so it is this whole process of letting go and understanding the hindrances, not by suppression, though sometimes that is also recommended, but with wisdom. And that is what makes it right samadhi, because the Buddha gives us these very important tools that form sort of a superstructure on which then the supramundane right view is built.
So we are understanding our unique mind as we enter samadhi. And that is why the samadhi is so effective. The other thing that I think is really important, in my opinion, is that because of this unique way in which the samadhi can be attained, therefore, it opens up the realm of samadhi to people who otherwise may not have been able to. As for example, Angulimala and other people who have had a lot of suffering or have done some very difficult karma. And so eventually, this samadhi is different from the other traditions in which samadhi was often thought to be sort of like a unification with the divinity or actually liberation itself. Whereas in the Buddha's teachings, this is really a tool and only a tool to understanding reality in the way that we've already looked at, the three characteristics, and then to end the cycle of samsara. And the importance of samadhi is very, very significant in the tradition, though it's not talked about because of the fact that it's often something that people get a little bit put off by because it seems so difficult. But Ajahn Chah was known to attain jhana in one in-breath, and this is something that's been described in some of the books written more recently. However, for what the Kuba Ajahns describe, the level of samadhi needed to get the first glimpse of Dhamma is actually upachara samadhi, which is much lower than jhana. With practice, then the Kuba Ajahns talk about the samadhi that can be sustained even in waking times, like not, I beg your pardon, not in formal seated practice, but even when we're doing our day-to-day work. But the important thing is then what do we do with the samadhi? And we'll talk about that in the next page, but I'll stop here, Nikhilji. तो इस स्लाइड में जो समझाया गया है वो ये दिया गया है कि जो समाधि है वो अनेक लोगों को एक तरह से भगवान बुद्ध ने एक प्रभावी यू कैन से टूल दिया है, एक प्रभावी टूल को आई डोंट नो हाउ टू ट्रांसलेट इन हिंदी, तो एक प्रभावी हथियार जैसा मान लीजिए दिया है, जैसे कि हम कैसे अपने क्लेशों के ऊपर वर्क कर सके और उनको लेट गो कर सके पहिया के माध्यम से। और इसमें विशाल जी ने बोला कि कई बार हमें सप्रेस भी करना पड़ सकता है, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम क्लेशों को सप्रेस करें, बल्कि उनको हम प्रज्ञा के माध्यम से समझ के और फिर उनसे मुक्ति पाए। और यूजुअली इन अदर ट्रेडिशन जो समाधि है उसको माना जाता है कि हम किसी डिविनिटी के साथ एकाकार हो गए हैं, किसी दैवीय चीज के साथ, या पूर्णतः मुक्त हो गए हैं, जबकि भगवान बुद्ध के जो शिक्षा है उसके हिसाब से समाधि का तात्पर्य है कि हम सच्चाई को समझ रहे हैं, जो भी हमारे सामने है, जो कि तीन लक्षण है उनको हम समझ पा रहे हैं प्रॉपरली, और इस प्रकार जो और साथ में जो संसार चक्र है उसको रोक पा रहे हैं। अजानचा वाज नोन टू अटेन, एक फैक्ट की तरह लिखा हुआ है कि एक लोग बोलते थे कि अजानचा को केवल एक अंदर जाने वाली सांस में ही ज्ञान की प्राप्ति, ध्यान अवस्था में चले जाते थे वो। और साथ ही में लिखा हुआ है कि जो बाकी सीनियर अजान्स हैं उनके हिसाब से जो समाधि चाहिए है हमको, जिससे कि हमें थोड़ा भी ग्लिम्स मिले, पहली झलक मिले धम्म की, वो कम से कम उपचार समाधि की अवस्था तो चाहिए, जो कि ऑफकोर्स ध्यानिक अवस्थाओं से नीचे ही है, लेकिन फिर भी उपचार समाधि की अवस्था चाहिए होती है। लेकिन अभ्यास के साथ साथ फिर हम एक ऐसी समाधि भी ले सकते हैं जो कि हमेशा हमारे साथ रहती है। और बट वन मस्ट नो व्हाट टू डू विद दिस मेंटल, लेकिन अगर ये अवस्था रहती है तो हमें अब इस अवस्था के साथ करना क्या है वो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। Okay, so I think that the other thing that it's important to maybe point out is that the samadhi experience is not something that is enforced on the mind or constructed, but it is actually a state of mind that is revealed when there has been sufficient letting go. And this is the letting go of the hindrances or the kilesas. And that stage, the kammatthana that the person is using then fills the mind, and so the state of samadhi is actually revealed. The other thing that I think is probably an important practical instruction that the Kuba Ajahns often give is, again, to the fact that you can't force this experience. You're not constructing this experience. You're actually, in a way, letting it present itself.
And so the attention given to the kammatthana is gentle yet firm. It's like holding a bird. So if you hold it too tight, the bird will, essentially try to escape because it has pain. And if you hold it too freely or softly, then the bird will again fly away. And also described as the lotus leaf on the surface of water. So it just gently touches the water, but doesn't get submerged in it or doesn't stay above it. And then once the samadhi is revealed, then the piti sukha ekagata that the mind experiences then purifies it at a very deep level and stabilizes it. And so it generates a level of upekkha, which is not upekkha from wisdom, but upekkha from the stilling of the mental fluctuations of the mind. And then that powers the mind to be able to see the heart of the Buddha's teaching, which is the anatta or shunyata. I'll stop there, Nikhilji, and then you can translate till then, and then I'll continue. Yeah, sure. So basically जो समाधि है वो स्वतः होती है, हमें कुछ पाना नहीं होता है, वो अपने आप ही मैनिफेस्ट हो जाती है जब हम धीरे धीरे अपने अंदर से जो विकार है उनके प्रति लेटिंग गो करते हैं, उनको जाने देते हैं अपने अंदर से, और ये रिवील हो जाती है अपने आप. इट इज नॉट समथिंग कि हमें कुछ बनाना है, हमें कुछ पाना है. ये हमारी एक स्वाभाविक अवस्था है. और जब हमारे विकार जाने लगते हैं और हमारा मन कमठान जो भी हमने बनाया है उसके ऊपर स्थिर हो जाता है, वो कमठान हमारे पूरे चित्त को भर देता है, तो हमारे को हम कह सकते हैं कि समाधि की अवस्था प्राप्त हो रही है. और जो कमठान, जो ध्यान का हम वस्तु ले रहे हैं, उस पर जो हमारी अटेंशन है, जो हमारा ध्यान लगाना है, वो बहुत ही जेंटल यट फॉर्म, आई मीन बहुत ज्यादा कस के पकड़ के नहीं रखना है. उसको ऐसे रखना है जैसे हमारे हाथों में एक चिड़िया हो, उसको हम बहुत तेजी से पकड़ेंगे तो वो तकलीफ में आ जाएगी, छोड़ेंगे तो उड़ जाएगी. तो जस्ट लाइक होल्डिंग ए वर्ड. एंड मे बी अदर एग्जांपल इज लाइक स्टिलनेस ऑफ लोटस लीफ. जैसे कि एक कमल की पत्ती होती है और वो सरफेस पर रहती है वाटर के, उसमें डूबती भी नहीं है, उसके ऊपर भी नहीं रहती है. तो अब इसमें बेसिकली जब हम समाधि में जाते हैं तो जो उस अवस्था में आने से पहले प्रीति, सुख और एकाग्रता जो मिलती है हमको, वो हमारे मन को और चित्त को इतना स्थिर कर देती है, और इतना पावर तो आ जाता है कि हम जो भगवान बुद्ध की जो हार्ट ऑफ द बुद्ध टीचिंग, मतलब जो भगवान बुद्ध की मेन टीचिंग है, जिसको हम अनित्य या अनात्म भाव बोलते हैं, शून्यता बोलते हैं, उसको हम देखने लगते हैं. और इसमें विशाल जी ने एक चीज बोली कि उपेक्षा जागती है, लेकिन ये उपेक्षा पहिया वाली उपेक्षा नहीं है, ये उपेक्षा है समाधि वाली उपेक्षा. तो देयर उपेक्षा इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू विशाल जी टू टाइप्स. वन इज born out of samadhi and maybe the other would be born out of pragya. Over to Vishal. Thank you, Nikhilji. So then so in the prior slide, we had talked about what do we do with the samadhi. And so one benefit of samadhi is just the calm abiding because of this equanimity upekkha that arises from samadhi. But what the Kubajans always talk about is that when the mind naturally tries to come out of samadhi, then you use that opportunity to contemplate. And here the contemplation is done first of the rupa, the body. And we talked in a prior talk about how that is with the different parts of the body, imagining the body as a corpse and the elements of the body, so as to see into the not self, the anatta of the body. And then as the body's anatta or emptiness is seen, then the emptiness of the nama aggregates, the other aggregates, the mental aggregates, also are seen in natural succession as they are sort of mixed with the rupa. And so therefore, the sequence in which this is advised is through the body. And only once we have seen the emptiness of the body, that the true emptiness of the mental components that are the other four aggregates are seen. And there's multiple talks by different Kubajans about this, including many by Ajahn Anand and Ajahn Tan that are available. So the other thing I thought is important is that, the three lakkhana, but the Buddha gives them in the order of anicca, dukkha, anatta because of the intellectual ability to be able to comprehend the first two. But the anicca is the way it starts, and the anicca then gives an understanding of dukkha, and then eventually the two give an understanding of anatta. But the level of understanding or seeing of these
three characteristics, it has to be sufficient to break Sakaya Ditti. And Sakaya Ditti is the sort of the knot that ties the Atta Bhava. So in a way, Sakaya Ditti is the core of the Atta. And so once we've broken it, then we've seen Anatta in the first level. And so then I'll stop there. I think this was the last slide. तो ये जो अंत के 2 पॉइंट्स हैं उनको विशाल जी ने बताया था कि जैसे कि जब हमारे अंदर समाधि जनित एक उपेक्षा और दृष्टि जाग जाती है तो फिर हम उनका कहना है कि उस पावरफुल स्टेट में समाधि से जितनी भी हमें शक्ति मिली है उससे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कायानुपस्सना से कंटेम्पलेटिंग द बॉडी। और जैसे जैसे फिर हम काया की एम्प्टीनेस को जानते हैं कि उस एम्प्टीनेस ऑफ द, तो फिर बाकी भी चीजें हमारे को जैसे ही काया की अनंतता या शून्यता हमें पता लगती है सबसे पहले, फिर इवेंचुअली धीरे धीरे हम बाकी जो 4 खंड है वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान, उनको भी हम क्रमशः जान जाते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं काया और ये सब आपस में इंटर रिलेट होते हैं। तो इसके बारे में उनका कहना है कि इस तरह की बात को बहुत सारे थाई गुरु आजान्स ने बताया है, जैसे आजान आनंद और धन ने, की शुरुआत कायानुपस्सना से करें। और द फॉर्मेट फॉर अंडरस्टैंडिंग गिवन बाय द बुद्धा इज इन द ऑर्डर ऑफ अनिच्चा, दुख एंड अनात्म। हमें जो जब कायानुपस्सना करनी है तो हमें कैसे चीजों को समझना है कि पहले अनित्य भाव को ऑर्डर है उसका कि अनित्य भाव को देखना है, दुख भाव को देखना है और फिर अनात्म भाव को देखना है। The level of understanding seeing of these trilakkhana has to be sufficient to break Sakkaya Ditti, which is the guardian notes of Atta Bhava. और अगर हम इस अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच जाते हैं तो हम सक्काय दिट्ठी जो है उसको हम ब्रेक कर पाएंगे, जो कि सोतापति के लिए सामान्यतः कहा जाता है। और यही वो सबसे रहस्यमयी गांठ है जिसको हमें खोलना है, जो अत्ता भाव के बारे में बना रखी है। तो फिर हम सक्काय दिट्ठी को ब्रेक कर देंगे और वही त्रिलक्षण का हमारा एक कहीं ना कहीं पर्पस भी है। इतना इतना अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए, इसके ऊपर भी है अंडरस्टैंडिंग लेकिन अभी इतनी चाहिए। तो दिस वाज द प्रेजेंटेशन बाय विशाल जी। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। I'm sorry that went a bit long, but the topic was quite profound, so I took a little time to put it together. Thank you, Vishal, because that is something new perspectives for us, and of course it's like long and it is so much repeated that sometimes things become mechanical. So it's always good to listen, from a new perspective. Thank you so much. Compliments to Vishalji and Nikhil for a very clear exposition. Very, very helpful, insightful. Thank you, Vishalji. Sure, my pleasure. Thank you, sir, very much. एक छोटा सा सर एक टेक्निकल प्रश्न में भी विशाल जी, यू वुड इफ यू लाइक टू आंसर, उपचार समाधि एंड खनिक समाधि ये एक ही बात है? Actually, Kanika Samadhi is the first level of Samadhi, and then after that, as the Samadhi stabilizes more, then that's the Upachara. The Upachara Samadhi has a very, according to the Thai forest tradition, has a very large territory. So you could be in Upachara Samadhi that at one extreme is very, very close to full jhana, and on the other extreme is very close to Kanika Samadhi. So in the Thai forest tradition, it's really sort of like this blanket term that is used to cover a huge
territory of unification. But yes, it's different from Kanika Samadhi, which is a very beginning state of mental quiet. So मेरे को थोड़ा सा जानना था वो ये कि जो हम आई थिंक सो जो विशाल जी जो मैं समझ पाई हूँ वो ये कि एक आप बोल रहे हैं कि समाधि के रूट से हम वी आर एक्सप्लोरिंग वेदनानुपश्यना कायानुपश्यना और उस रूट से हम वी आर एक्सप्लोरिंग और that's is that so one और दूसरा ये कि जब आपने फर्स्ट 2 स्लाइड्स बताई थी तो फर्स्ट 2 स्लाइड्स में एक मिनट दिखाएंगे जरा उसमें जो बात कर रहे थे हम कि आप दोनों चीज को अलग कर रहे हैं बॉडी और एक सेकेंड या सो जो परसेप्शन के थ्रू जैसे बॉडी के लिए भी आप परसेप्शन लाइक यू आर सेग्रीगेटिंग बॉडी एंड माइंड with that there is a path I think so जो beginning level कहना चाहिए या क्या जो starting point है जो वो वहां से start हो रहा है जहां पर body को अलग किया जा रहा है और mind को अलग किया जा रहा है और non self और को देखने का प्रयास कर रहे हैं और जो हम सेकेंड स्लाइड में एक मिनट कौन मतलब ये और दूसरा आपने जो लास्ट में जो प्रेजेंटेशन दी है समाधि से रिलेटेड समाधि आपने बोला इनिशियल लेवल की समाधि होनी चाहिए और फिर इनिशियल लेवल के बाद इट लीड्स टू एक्सप्लोरेशन कि हम अनंतता की तरफ जा रहे और दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू अटेन अनंतता और सेकंड स्लाइड भी एक मिनट जो जो एक जिसमें सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट आई थिंक सो जो मैं पूछना चाह रही थी कि इस तरह से आप दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि दैट इज हाउ वी मतलब दैट इज व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग इन द सेंस अगर मैं उसको क्रक्स लूं तो I didn't completely understand, Poonamji. Could you please clarify what you were asking? I didn't understand. I'm sorry. What I'm asking is that you have taken samadhi as a basis for sati going through all 4 satipathanas, right? Okay, so? I understand now. Yes. So this is a good question. Basically, the satipatthana forms the basis of samadhi. So we attain samadhi. I think we talked about it in a prior talk. But you're right. The basis of samadhi is the satipatthana. But then after samadhi is attained, we're actually doing the same thing again. But now the level of penetration into the understanding of the 3 characteristics is at a level that is much more effective. But yes, you're right in that the satipatthana are done before and also after, but it's done with a different mind. One mind after samadhi is much more stable and able to really penetrate into the 3 characteristics. So that way we can see into the emptiness of the body and then eventually into the other into the other aggregates. Is that the question you were asking? I think so, but I want to make sure. So what I understood was the way I understood samadhi is definitely as a tool, what you said, and it helps you to penetrate in your kilesha जो आपने बोला कि आपने भी बोला ऐसा I think so. तो that is just the work or it is beyond that. I mean शायद मैं मिस आउट कर गई लास्ट के इसमें but
यहाँ तक मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि आपके समाधि का पर्पस ही इतना है कि आप अपने जो पेनिट्रेटिव एबिलिटी है उसको आप थोड़ा एनहांस करते हैं. सो क्या आपका इसमें सहमति है या फिर you are different, or it goes beyond, path goes beyond that? No, you're right in that, but one cannot have samadhi till the hindrances are put away. So in order to let go of the hindrances, also one uses the satipatthana. So this is I think so. Sorry interrupting you, because this is at the beginning level, that certain level of samadhi needs to be. You need to have that certain level of samadhi to understand your kalesha. But after that, to see the मतलब the क्या कहना चाहिए, it's ingrained yeah. Yes, you're right. That is correct. As I understand what you're saying, that is correct understanding, that once the hindrances are let go and then the samadhi becomes more and more deep and stronger and more stable, then that mind is then used to penetrate deeply into the three characteristics of body and mind. Okay. And that's it. Huh? There is no other. There's no other. Yes. Yeah. Okay. Yeah, that is it. That is the path. Yes. Nikhilji, thank you for the translation as always. Yeah, pleasure, honor. Sometimes you feel that the path has to be in a particular sequence. It is actually cyclic path. So we start from samadhi, some element of right understanding, and then that gives rise to some element of right thinking. And the barest element of what are the elements of right thinking? Nekhamma sankappo, avyapada sankappo, avahimsa. So nekhamma sankappo relates to dana, avyapada and avahimsa relates to shila, and then the fructification. So they are all cyclic. तो हमको अगर थोड़ा हमारा व्यू थोड़ा ठीक होने लगता है, हम दूसरे को अपने दुख का कारण नहीं मानते, अपने को मानते हैं, बेसिक इतनी बात, तो उससे थिंकिंग राइट हो जाती है. तो जब हम दानशील की बात करते हैं तो उसके आधार पे हमारी वाणी सम्यक हो जाती है, क्योंकि हमें लगता है कि हम उल्टा सीधा बोलेंगे तो हमें दुख होगा. तो वाणी संयम हो जाती है और फिर हमारी कर्म संयम हो जाते हैं, हम गाली गलौच नहीं करते, लड़ते नहीं हैं, और फिर हमारी आजीविका को भी संभालते हैं कि भाई आजीविका भी ऐसी ना हो कि हम दूसरों को कष्ट पहुंचाए. और इस आधार पे फिर आगे चलते हुए हम प्रयास करते हैं सम्मा वायाम. क्या प्रयास है कि नेगेटिविटीज को अंदर ना आने दिया जाए, नेगेटिविटीज आ गई हैं तो उनको हटाया जाए. तो वो करेंगे, कुछ हद तक करेंगे तो सती डेवलप होगी. अगर कुछ भी नहीं वो करेंगे तो सती नहीं डेवलप होगी. फिर सती डेवलप होगी तो समाधि डेवलप होगी. तो ये जो है उस समाधि के आधार पर प्रज्ञा और स्ट्रांग बनेगी. फिर प्रज्ञा और स्ट्रांग होगी तो शील और स्ट्रांग होंगे, शील स्ट्रांग होंगे तो समाधि स्ट्रांग. सो इट्स लाइक ए स्पाइरल which works in that manner. It will naturally progress in that manner. So we don't have to worry पहले ये करना है कि वो करना है, सारे ही करने हैं. And every samma samadhi is that in which all other 7 factors are present. At one sutta, Buddha defines like that. सारे 7 फैक्टर प्रेजेंट है तभी समाधि सम्मा होगी, नहीं तो कुछ समाधि तो बहुत तरीके से की जा सकती. तो अगर हम अष्टांगिक मार्ग को एक साइक्लिक पाथ, एक स्पाइरल की तरह समझते हैं, then we realize it is a progressive development of all the factors together. So there are teachers who would say samadhi leads to panya. There are other teachers who would say panya leads to samadhi. Both are correct. So we have to really work in a manner with understanding कि वो it doesn't work in a sequence, it works in a cyclic manner. Once we understand it, then the doubts become less. Okay? Come show.
सर अभी मैं कुछ दिन पहले वो अजान मन का सुन रही थी बुक का, तो उसमें एक तो ये चीज थी, आई मीन विशाल जी ऑल्सो में से दिस थिंग, एक तो ये जो अभी कॉन्शियसनेस की बात की थी, विज्ञान की जो बात कर रहे हैं, तो विज्ञान को भी एक सेपरेट, मतलब विज्ञान से, वैसे तो विशाल जी का कहना, सॉरी विशाल जी एक सेकेंड, विशाल जी आपका ये कहना था कि जो विज्ञान इज द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, बट वी डोंट गो एग्जैक्टली थ्रू विज्ञान एक्चुअली। तो वो हालांकि वो बीज सुत्था, मैं अंडरस्टैंड की वो बीज की बात कर रहा है, तो इसलिए शायद वो विज्ञान को बीज कहा गया है, एंड दैट इज हाउ इट गोज। बट ओवरऑल अगर सर मैं देखती हूँ, अगर तो जो मतलब ये बड़ी नया सा मेरे लिए कॉन्सेप्ट आया कि जो हम विज्ञान से बात कर रहे हैं, तो ये सेपरेट एंटिटी की भी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो अजान मन ने बोला था वो शायद मुझे जो समझ में आया था, तभी मैंने अभी वैसे क्वेश्चन को भी मैंने रखा हुआ था होल्ड पे, बट क्योंकि आज कॉन्शियस ये बात हुआ था विज्ञान का, तो इसीलिए कि क्या एक सेपरेट भी है जो अंडरस्टैंड कर रहा है इस तरह से, जो समझने का प्रयास कर रहा है, क्या ये मतलब लाइक ऐसा है कुछ? नहीं मतलब थियोरेटिकली अभी वो जो मैंने समझा है ना, वो भी समझने के लिए भी मैं कंफर्मेशन कर रही हूँ आपसे। मैं सिर्फ ये मैं आपसे वो नहीं पूछ रही हूँ कि मुझे बता दीजिए ऐसा, मैं सिर्फ ये कंफर्मेशन, क्या मैंने सही समझा है ये जो बोल रहे थे अजान मन? Taking it a dangerous territory, you know. इसी अगर आप अजान मन की टीचिंग्स को पढ़ते हैं तो उसमें शुद्ध चित्त की बात आती है, which is outside the five khandas. Okay, but as Vishal was pointing out, this is not in the directly available in the Tipitaka. It is a derivation from their own experience. There are three suttas in which mention is made of Aniddasan Vijnana. और उसको क्या इंटरप्रेट करना है, ये डिफरेंट लोगों ने अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया है। तो उसके बारे में हमको बहुत गहराई से साधना करने के बाद समझ में आती है, और कुछ हद तक अभिधम्मा की बात जो है कि माइंड मोमेंट्स कैसे काम करती हैं, सती का वास्तविक अभ्यास हम कैसे करते हैं, उस तरफ जब हम जाते हैं तभी वो बातें थोड़ी समझ में आने लगती है। तो उसको हम अगर ना ही लें तो अच्छा रहे, है ना। तो हम तो इतना ही समझे, जैसा विशाल जी ने कहा ना, कि हमारा उद्देश्य ये रहे कि भाई जो हमारे विकार हैं, जो हमारा एरो लगा हुआ है, वो क्यों लगा है उसको देख रहे हैं, वो उसकी किसने मारा, क्या हुआ, क्या उसकी बेसिस थी, उसको रहने दें। हमें मालूम है कि हमारे में ये विकार है, राग है, द्वेष है, बेचैनी है ना, और आलस्य है, वेरियस मैनिफेस्टेशंस, ग्रीड, हेट्रेड एंड डिल्यूजन के अलग अलग तरह के मैनिफेस्टेशंस हमारे में है, हमें मालूम है। तो हम उसको हटाने में अगर हम अपने आप को, अपनी साधना उस तरफ ध्यान धारण करें, तो अपने आप धीरे धीरे मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि वो जो बातें हैं अनिर्दशन विज्ञान की, वो अरहंत के बारे में एप्लीकेबल है एक्चुअली, और उसको आप बाकी लोगों के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, वो एक कंटेंशन की बात है, वो एक क्या कहना चाहिए आर्गुमेंट की बात है। तो इसलिए उसमें ना पड़े तो ज्यादा अच्छा रहे। हम अगर अपना यही समझ लें, और जब हमारा चित्त शुद्ध होता चला जाएगा, जैसे विशाल ने भी, तो धीरे धीरे हमको भी मालूम पड़ जाएगा क्या सत्य है। तो वो कोशिश की गई है अनंत की मन स्थिति को समझाने की, जो हमारे को आदर पूर्वक कहना चाहिए हमारे बस का नहीं है, इसलिए भी कीप इट असाइड। सो आई वुड जस्ट से दैट, बिकॉज अदरवाइज वी विल गेट इनटू सम डिफिकल्टीज ना, तो दिक्कत हो जाएगी। The other thing I think I would say that the ability for even a person who, you know, it's this Kuba Ajans talk about it, and even in the canon, for a Sekha or a Sota Panna to understand the abiding of Arahant is not possible, because you know, it's not possible even for
incompletely awakened being to understand the abiding of a fully awakened being. So understanding that, we have to realize that for somebody who has no level of awakening, to try to use their sort of ignorant way of looking at the world to try to understand the abiding state of abiding of an arahant is actually fraught with a lot of risk, because what it would do, it would be almost impossible for a mind that thinks that there is this true self that's looking from behind the five aggregates, that to be able to see anatta, because the mind with the ignorance will immediately then identify with that chitta outside the khandhas, and therefore will not be able to see into the emptiness of the aggregates, because it will immediately attach to this other thing, which essentially is a mind-created idea, just like the atta is a mind, just an idea in the mind. So it's often taught that we should try to understand those 2 or 3 occasions where the suttas describe the abiding of an arahant in the context of the thousands of other teachings that the Buddha gives on the 3 characteristics, rather than to redefine all of the thousands of times where the Buddha talks about these things just because of the 2 times where there is this other thing described. And that would be probably a more wholesome way to look at it. And especially from the perspective of Putujanas, I think we can get into real trouble if we try to imagine that and make stories in our head about what that might be. Just a thought about that. Yeah, very true. Actually, मुझे वो समाधि की वजह से मैं I was led to that book of Ajahn Mun. So I was trying to understand more about samadhi. Thank you for a word of caution. तो हम समापन करते हैं।